देखिए फिगर इज सच, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी and C is 25 degree as it is given in the question, and this one is D, A is unknown, and this one is 55 degree, and this is E mention किया गया, और ये आपको F, A B C D E F, A B C D A, angle is 55 degree, angle C is 25 degree, and what we have to do, BAD is parallel to EF, BAD EF के parallel है, okay fine, BAD parallel to EF, it is given. And now what, angle AEF is 55 degree, that is mentioned there, ACB is 25 degree, that is also mentioned there, and we have to find angle ABC. Angle ABC is what we have to find out, ABC, okay fine. C, if EAD, then angle EAD plus angle AEF 180 डिग्री, रीजन होगा को इंटीरियर एंगल्स, EAD, एंगल EAD मुझे नहीं मालूम है, AEF 55 डिग्री, it will be 160 125, so angle EAD will be 125 degree, okay. Now this one angle BAC is equal to angle EAD, reason vertically opposite angle. Now angle BAC will be equal to EAD, and what is EAD? 125 degree. Now again in triangle ABC, angle ABC plus angle BAC plus angle ACB is equal to 180 degree. Reason is what? Angle sum property of a triangle, angle sum property of a triangle. Now we have to note angle ABC, just leave as it is. ABC, BAC we have find out, BAC 125, ACB is given 25 degree is equal to 180 degree, or angle ABC is equal to 180 minus 150, that is 30 degree. Is it the answer? Yes, sir. Okay, fine. चलिए, any confusion in if you दोबारा बताऊं, ये समझ में आ गया? सर आ गया। Okay. सर A, B, C and D. In between it there is a triangle, right angle triangle. EFG, EFG, and GFD is 30 degree.
AEF is 65 degree. And this one is X degree. X 30, G 90 degree. That's it. This is only the information. These are only the information given there. And what we have to do, we have to find the value of X. चलो देखते हैं कैसे x की वैल्यू निकलती है। तो देखो जी, AB और CD पैरेलल लाइन है, तो उससे एक फंडा तो क्लियर होता है मेरा कि एंगल AEF इज EFG प्लस एंगल GFD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल AEF इज EFD and EFD में कौन कौन है, EFG प्लस GFD। नाउ राइट इट डाउन, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है। AEF is 65 degree, EFG is unknown, we have to find out EFG, plus GFD is 30 degree. (65 degree minus 30 degree) 35 degree. So EFG we have got 35 degree. Okay, now we will find out in triangle EFG. X degree plus 35 degree, sorry, write it down, angle EFG ज्यादा क्लियर होगा, प्लस EGF is equal to 180 degree. Same angle sum property of a triangle. x डिग्री रहने दो। EFG मुझे पता हो गया है, EFG 35 डिग्री, तो और EGF 90 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री एंड माइनस 90 डिग्री। 90 minus 35, 55 degree. 180 minus 90, 90. 90 minus 35, 55. So is it given there? X is 45 degree, 55 degree. Is it clear? Yes, sir. Okay, write it down if you wanna write it down. सर नोट कर लिया। Okay, fine. In this one, two lines are parallel, AB and CD. AB, CD are parallel lines, and GF is 90 degree. G E F is 90 degree, and means F is 90 degree, EFB, and this one is 130 degree. This whole, what we have to do, we have to find angle EGF.
देखो जी, since AB is parallel to CD, angle ये आपको हो गया 130, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 तो ये भी 90, तो सिंपली वी विल फाइंड आउट एंगल GEF। पहले वहां पर मेंशन कर देते हैं वो एंगल EFB is plus angle DEF is equal to 180 degree co-interior angles। एंगल EFB क्या है 90 डिग्री, तो एंगल DEF मुझे नहीं मालूम है, also be 90 degree। as we can see here, angle DEF 180 degree minus 90 degree, that is 90 degree। now we have to find out angle GEF। angle GEF is equal to GED minus angle DEF, which means GED कितना है मेरा डिग्री माइनस 90 डिग्री 40 डिग्री, एंगल GEF हो गया, ठीक है। मुझे क्या EGF निकालना, चलिए फिर इन ट्रायंगल GEF, एंगल EGF प्लस एंगल GFE प्लस एंगल GEF is equal to 180 डिग्री। एंगल प्लस एंगल GFE प्लस एंगल GF, मुझे क्या क्या मालूम है, EGF मालूम है नहीं मालूम है, यही तो निकालना है, एंगल EGF ही निकालना है, यस EGF ही निकालना है। GFE is 90 degree given it at this will be 90 degree, so it will also be 90 degree, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, प्लस GEF 40 डिग्री। एंगल EGF 180 डिग्री minus 130 degree, 90 plus 40 130 degree, so EGF is equal to 50 degree। is it the answer? Sir. Is it clear? Yes, sir. Okay,